guys, good morning. This is Neha here and welcome back to my channel. तो सुबह का बेला है, अभी 10:30 बज रहा है। तो अभी मैं एक्चुअली मेरे जो छोटा सा गार्डन है बैल्कनी में, वहाँ से मैं अभी फूल तोड़ने जा रही हूँ, सो दैट मैं पूजा कर सकूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ। गुड मॉर्निंग चलो, मेरी पूजा खत्म हो गई। ये बन रहा है मशरूम करी। तो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर तापस। ये रहा राइस। तो गाइस लंच ख़त्म हो गया है, लेकिन बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। मैं दिखाती हूँ कितनी ज़ोर से बारिश हो रहा है। तो गाइस मैं अभी फेस पैक बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस में थोड़ा टैन आ गया है, तो इसलिए। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, मैं ये कॉफ़ी पाउडर यूज़ करती हूँ, एंड ये रहा हनी, एंड ये रहा एलोवेरा जेल। तो सबका एक एक स्पून ले लेंगे, फिर इसको मिक्स करके फेस पे लगाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, तो अभी शाम का टाइम है, मैं अभी पाव भाजी बनाने जा रही हूँ। दिस इज़ रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, pav bhaji masala, cumin seed and turmeric powder. And this is chopped onion, chopped tomato, chopped coriander. This is lemon and slight lemon and green chilies. And this is ginger garlic paste. And this is boiled potato and green peas. And this is pav bhaji. This is pav, and I'm using Amul butter. Let me switch on the flame.
let me add some oil and butter. बस बटर को मेल्ट होने देते हैं। Good. So now I'm using cumin seed. तो अभी जीरा हो गया है, तो अभी ऑनियन वगैरह डाल देते हैं। ये थोड़ी सी ग्रीन चिलीज है, उसको भी डाल देते हैं। अभी थोड़ा सौटे करेंगे जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए। ये मेरी लाइट जो कि भी काम आ रहा है, भाई ने गिफ्ट किया था बर्थडे में। ये थोड़ा ब्राउन कलर का हो गया है अभी। नाउ आई एम एडिंग सम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑन इट। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका रॉ स्मेल जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट का थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ है, और जब तक इस स्मेल चला जाएगा तब तक हम लोग पकाएंगे इसको। तो फिर इसमें हम टमाटो ऐड करेंगे। Now I'm going to use some chopped tomato. इसको तब तक फ्राई करके जब तक ये अच्छे से गल ना जाए टमाटो। तो ये भी पक गया है, अभी हम लोग इसमें सारा मसाला डाल देंगे। मिला देंगे अच्छे से इसको 2 मिनट तक। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे, इसको पकने देंगे तब तक। ये जो स्टफ बनाई थी, लाइक दिस इज द बॉइल्ड पोटैटो एंड ग्रीन पीस स्टफ। सो लेट मी हीट फॉर 1 मिनट, क्योंकि इसमें गर्म पानी हम लोग यूज़ करेंगे। तो जस्ट मोमेंट। थर्टी तक रखेंगे, बस निकालेंगे। ये रहा हमारा स्टफ। ये अभी हो गया है, तो इसमें अभी हम लोग बॉइल्ड पोटैटो एंड ग्रीन पीस डाल देंगे, क्योंकि उसको मैश भी करना है। ये रहा पोटैटो एंड ग्रीन पीस। इसको अच्छे से मिला देंगे, फिर इसको मैश करेंगे मैशर से। तो ये रहा पावभाजी मैशर, लेट मी मैश इट। अच्छे से मैश कर लिया हूँ, बस इसमें थोड़ा सा स्टफ डालें, फ्लेम हाई कर देंगे। और एक बड़ी मसाला को डाल देंगे। ये ऑलरेडी है अभी। ये रहा डोसा तावा जिसमें हम लोग अभी पाव गरम करेंगे। ये रहा पाव।
स्लो करेंगे इसको, तो इसको भी कलर देंगे, थोड़ा बटर लगा देंगे, बंद कर देते हैं 10 मिनट। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता आप डाल के भी कर सकते हैं। बस गर्म है बहुत ज़्यादा। ओके, तो इसे सारा गर्म कर देती हूँ, फिर सर्व करती हूँ, आपको दिखाते हैं। तो अभी इसमें सर्विंग बाउल इसको सर्व कर लेते हैं। तो इसको धनिया पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा बटर, तो सर्व करते हैं। तो पाव भाजी रेडी हो चुका है, ये रहा। तो अभी बस मैं आप उसको देना चाह रही हूँ एंड मेरे मदर इन लॉ को, कि वो लोग टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। ठीक है, Buenos Aires. taste it and tell me. बोलो जाके बड़ा प्लेट कर लो। Wait. Eat it. Eat it, mama. Okay guys, so I'm ending my vlog for today. If you like